I guess I hear. Now, seed from ovule, Rucum seedella, advantages of seed, then viability of seed dispersal, Lupinus accitus କଥା ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ 10,000 years ଯାଇକି ଇଏ ରହିପାରିବ ତମର dormant ହେଇ ରହିପାରିବ ଆଉ 2,000 years ଯାଇକି ରହିପାରିବ ତମର phoenix dactylifera. Next ଆସିଲା fruit from ovary, ovary କେମିତି fruit ବନୁଛି, true fruit କଣ, false fruit କଣ, ଯେ ovary develop କଲା ସେ true fruit, ଯେ ଅବିକା ovary ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯୋଉଠି develop કરે ସେ ହେଇଗଲା false fruit. And in some species, fruit develop without fertilization. Such fruit are called as parthenocarpic fruit. And today's class was about apomixis and polyembryony. This one, apomixis, polyembryony, as the class thila, hame aji padhile. Now, a part par asla kichi question. Okay. So right now, I'm requesting all of you to kindly answer these questions. Amano pakhare abhi question rahila. Read all these questions and answer in the chat box. Question number 1. Spiny, sticky pollen grain and large identity colored flower associated with option number B. Yes, it is entomophily. Right answer. Right answer, Shruti. Yes, Rajalakshmi. Right answer. Good. Santoshini, Vijayalakshmi, Jagdish, Krishna, Suchismita. Okay. Faizan is one step ahead. Faizan is saying ki question number 2, the answer is C. Yes. Abundant occurrence of fossilized pollen grain is due to resistant sporopollen. Question number 2, the answer is sporopollen. Option number C. Yes. Now, yes, good. If you look at the question number 3, then mu tam simultaneously eta koi dei padebi. Yes. The first question answer is entomophily. Second question answer is sporopollen. Third is tamara bilobed dithecus. Answer kon kali tame answer hoji C boli. A bilobed dithecus anther had 50 microspore mother cells per microsporangium. How many male gametophyte this anther can produce? देखो अभी क्या से कहला कि 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल अछि 50 टा एमएमसी अछि 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल और बाइलोब डाइथेकस anther at 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पर माइक्रोस्पोरेंजियम हम जानछो कि गोटिए पोलन ग्रेन भितर चारिटा माइक्रोस गोटिए anther भितर चारिटा माइक्रोस्पोरेंजियम थिला जदि गोटे रे 50 टा एमएमसी अछि ताकटा केते हो 50 into 4 is equal to 200 कोन हे गेला MMC. Clear? And कितना मेल गैमेटोफाइट माने हेला पोलन ग्रेन यदि गोटिए MMC आगो जाइके चारिटा बनौची मेल गैमेटोफाइट ताले 200 टा बनबो 200 into 4 आंसर इज 800. 3 नंबर डी हबनी पिला माने 3 नंबर आंसर हबो अबिका माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर देयर per microsporangium. Yes, answer is 800. Faizan, right answer. Option B is the correct answer. And flowering plant have developed certain outwarding devices to discourage pollination and encourage cross-pollination. One of these is not example such as outwarding devices. Declining outwarding devices, digogamy outwarding devices, hortogamy outwarding devices, but ये जो क्लिस्टोगैमी अच्छी क्लिस्टोगैमी तुम्हारे गला ऑप्शन डी. Question number 4, option D is the right answer. Next, which of the following statement about sporopollen is incorrect? Sporopollen कौन खोजला? So organic matter has apertures called jumper where sporopollen is present. Sporopollen can withstand high temperature and strong acids. Option C is the correct. It is present hobani ye hijiba absent. Yes, question number 5 answer is C. Yes, Vijay Lakshmi Sandharani. Question number 5 answer is C.
Persistent nucellus is called as perisperm, and perisperm is present found in the black pepper. 6 number question is A. Yes, good. 6 number question answer is A. The scutellum observed in a grain of wheat of maize is comparable to which part? Scutellum ka kong kaiba? Scutellum is one of the cotyledon. Black pepper and beet. Yes, Jagdish, right answer. Black pepper and beet. Shruti, 7 number question answer is A. मतलब scutellum cotyledon बोली भी कहिबा. Now, next question is like what is the function of the filiform apparatus in angiospermic embryo sac? Angiospermic embryo sac re what is the function of angiospermic embryo sac? Guides for 8 number question answer कौन है? 8 number A. Guides pollen from synergy to egg. Filiform apparatus ra. Guides pollen from synergy to egg, helps in entry of pollen into synergy, prevents entry of opening more than one embryo to synergy. Shruti is saying answer B. Yes, option B is the correct answer. Helps in entry of pollen into synergy. Filiform apparatus ra काम होगी guide. No, it will guide the pollen tube. Pollen tube number ରହିବ ସେଠି helps in entry of pollen into synergy. Question number 8 answer ପିଲାମାନେ କହୁଛ B ବୋଲି pollen tube ର entry ତ କରେଇବନି pollen tube ସେଇ ଯାଇ ଯିବ pollen grain entry ହବ option B ମାରିକି ଚାଲ. Now from both Aspergillus Cleistogamous flower କୋଉଠି ଅଛି କମଲେନା ପାଖରେ ଅଛି. From among question number B. Yes. From among the sets of terms given below, identify those that are associated with the gynosium. Gynosium तो क्या associated है? Gynosium stigma अच्छी, oval stigma style ovary. Question number 10 answer कौन है? 10 answer is A. Stigma भी अच्छी, ovule अच्छी, embryo sac अच्छी, placenta अच्छी. चारटा present अच्छी. If an endosperm cell of an angiosperm contain 24 chromosome, endosperm माने हला कौन है? Triploid. 3n is equal to 24, n is equal to 8. Each cell of the answer is 8 to the 16. Yes, Ashti Chandra Patra. Correct answer. Question number 11. Answer होची केतना हमारा root. Root हला मतलब diploid cell. और diploid cell असला माने answer कौन होगा एठी C होगा. Yes. Question number 12. Which one of the following is not found in female gametophyte of an angiosperm? Angiosperm female gametophyte रे synergid अच्छी filiform apparatus synergid germ port. Right answer is 12A. Dash is the transfer of pollen grain from anther of the one flower to the stigma of another flower of the same plant. It is J-tonogamy. Question number 13 answer is J-tonogamy. Yes, right answer J-tonogamy. During microsporogenesis, meiosis occurs in dash. कोठी meiosis होची microsporogenesis बेले meiosis occurs in endothelium, microspore mother cell, microspore mother cell. Meiosis कहला तो meiosis over diploid cell रहबा. Good. Sandharani good answer. Shruti good answer. Jagdish, Mona Lisa, all are giving good answer. Right answer. Embryo sac is to ovule as dash is to anther. Yes, these are right answer. Okay. Question number 15. Sandhya is saying A. ଯେମିତି ଓଭେଲ ଭିତରେ ଆସିଲା ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସ୍ୟାକ୍ ସେମିତି pollen grain is to anther. Yes or no? Option C. Option C is the right answer. On the number answer is option C. Yes, Vijayalakshmi, right answer. Yes, Jagdish. Yes, Jisa. The answer is shifting number C. Yes, Sangeeta. Yes, Somyasri. Santoshini. Right answer. Okay, beta.
Now the last questions. Last question कौन कहला थी? No, the last question. Double fertilization is character feature of what? Angiosperm flower. Question number D. Yes, Faijan. The fusion product of polar nuclei and male gamete. Polar nuclei male gamete एटा आपस में मिसले तो हम कौन कहबा? ट्रिपल फ्यूजन बोली कहबा ना कौन बने प्रोडक्ट पचाजी प्रोडक्ट हेले आंसर ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN option C right answer. A leaf cell of flowering plant 22 chromosome, then the number of chromosome would be the leaf is 22 chromosome, leaf is diploid, তাহলে 11 in the gametes. Gamete रे केटा रहइबो 11 ही रहइबो. 18 number is A. Yes, 18 no B की कहला 22 in gametes हबो नि रे. Gamete माने haploid. Yes, Vijay Lakshmi. Right answer is A. The best example of polyembryony, citrus fruit. 19 number B. The embryo sac of a typical dicot at the time of fertilization. On a chi, 8 nucleated, 7 celled. 7 celled. When the hilum, chalaja, micropyle, all are present longitudinal axis, it is called as orthotropous ovule. Erect. Orthotropous is erect. 21 no D. Right, Faijan. The phenomenon where the ovary develops into a fruit without fertilization is called as ovary ରୁ fruit ହେଇଯାଇଛି. Fertilization ହେଇନି बिल्कुल. कौन कहबे त कहमे? Question number 22. 22 ର parthenocarpy. Ovary develop into fruit without fertilization. It is called as parthenocarpy. Yes. Right answer is parthenocarpy. Ovary ଟା fruit को convert ହେଇଯାଇଛି. Seedless fruit. Parthenocarpy is seedless fruit. Which of the following flowers only once in a lifetime? Like bamboo species. Which among these are the layers of microsporangium? All of these. The last question, persiosperm is the remains of new cells. Option D. Yes. So with this, we have concluded, we have come to conclusion of this entire segment. Take a 10-15 minute break and we'll start the next chapter very soon. Lemona, thank you so much for joining. Thank you for your kind attention and your participation. The next class will be started at ठीक 15 मिनट छाड़ी 9:20 रे स्टार्ट करिया नेक्स्ट क्लास को. ओके ओके देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे एई जीवनी रहिथिबो अगेन हम जेनेटिक्स रो बिगिनिंग एज करि कि जेबो. ओके take a 15-minute break, take a quick short break and then we will go and start the
Okay. So now, dear students, welcome back. Welcome once again to this DHS sponsored academic support program. So, the students, am I audible? Is the screen visible to all of you? Kindly mention in the chat box. Okay, 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 Situl. Done. So, okay, got it. So, dear students, uh, this is Directorate of Higher Secondary Education online academic support program for your NEET entrance, JEE entrance. I am myself Devasis Sahu, and today I am going to discuss about the very interesting topic and one of the most important part of your NEET entrance examination, that is the principles of inheritance and variation. So in the previous class, we have already completed about the, just a second, students. Recording. No. Okay. So in the previous class, we have completed the chapter 1 of your second year 12th syllabus, that is sexual reproduction and planning plan. So in that chapter, we have completed the entire details in brief, and then the questions. So 25 questions which are asked in your previous exam, our monthly NEET JEE exam. We have discussed about that topic. So today, from here, we are going to discuss about the second topic, the second chapter of this syllabus, that is principles of inheritance and variations. Yeah. Okay. आज चैप्टर आम टॉपिक कौन अच्छे टॉपिक होची ओनली दिस पार्ट डेफिनेशन concept of gene and DNA, pre-Mendelian ideas, terminologies. We have to discuss about these things. So let me write these things for you. That today's topic was principles of inheritance and variation. Principles of inheritance and variation. Okay. এই যে চ্যাপ্টারটি আমরা দেখুছি, it is the most important chapter along with the molecular basis of inheritance. These two are the most important chapter of unit number 2, and most of the questions are going to be asked from this chapter. This one, এই chapter को ଆମେ shortly genetics ବୋଲି ବି କହୁଛେ। ये जो word ଆସିଲା genetics ପିଲା ମାନେ, first of all, first let's discuss about the definition. Yes or no? What is the definition of this very word genetics? What is genetics? Now it is the branch of biology. It is the branch of biology which deals with the study of heredity and variations. Okay, so ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି କଣ ପଢୁଛେ? Today we are studying about genetics, principles of inheritance and variation. Our first work is to understand the chapter, the name of the chapter, topic ର ନାଁ କୁ ବୁଝିବା, and a topic ର ନାଁ ରେ ଆସିଲା genetics. So genetics ର definition କଣ ଥିଲା? And it is a branch of biology, or you can say the branch of science which deals with the study of heredity and variation. So ଏଠି ଦିଟା word ଆସିଲା ତମ ଆଗରେ. One is the heredity and second one is the inheritance or variations. So each word meaning kon, what do you exactly mean by these two words? One is your heredity and second one is your variations. Remember, what is heredity? Heredity mane hoji kon? Heredity stands for
transmission of characters. Heredity means transmission of characters from parents to offsprings, or you can say parents to progeny. That is called as heredity. Yes or no? What is heredity? It is the process, it is the transfer of character from one generation to next generation. It is a transfer of character from parents to their respective progeny. It is a transfer of characters from the parents to the respective offsprings or child, you can say. That is called as heredity. And what do you mean by variation? This word is like variation. Now, variation means the degree of change. Yes or no? If you see the two individuals coming from the single parent, the same parent are not exactly look alike. There are some angle of change, some degree of variation, degree of change, and that is called as variation. Yes or no? ଯେମିତି କି ଦି ଭାଇ ହେଇଗଲେ, ଦି ଭଉଣୀ ହେଇଗଲେ ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଗଲେ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ତମେ exactly similar ପାଇବ ନାହିଁ. Then so he जो angle of change अच्छी, he जो degree of change अच्छी, that degree of change is called as variation. So ये जो chapter में पढ़ो genetics, it is the branch of biology. हाँ, कुछ recording ठीक है चल रही है. The second start कर चलेंगे already. Changing of character from one generation to generation is known as variation. Okay, character spelling तो first of all ठीक करिबो माने नहीं. Now तो ये गला कहा कथा ना हेरिडिटी तापर आसला एठी वेरिएशन कथा. तो हम जेनेटिक्स कोन हम जानि गले. जेनेटिक्स सल्ला परे हम नेक्स्ट काम होची कोन जेनेटिक्स जानला परे हम देखिबा कि एठो वर्ड अछि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस and variation. So we all know what is variation, but what exactly mean the term inheritance? What do you mean by the word inheritance? पिलामन देखो, heredity means transfer of characters. गोटे जगह रो और जगह ट्रांसफर होची, character transfer होची. But exactly how it is transferring, that means the phenomenon, the process. If I talk about inheritance, then it is what? The process or the phenomenon of the process or phenomenon of transfer of characters from parents to offspring is called as inheritance. Yes or no? ठीक clumsy एगला तमा screen ने but तमे देखि पारथो तीनटा पार्टेड बुझैले. First, principles of inheritance and variation. तमे पढिबा कि जो inheritance होची, the variation of the principles कोन, what are the laws, what are the theories, what are the hypotheses. The inheritance कोन थिला, the process of transfer of character from parent to the respective offsprings. The parent offspring of chemically transfer is the character, the process. For example, let me tell you, I go to a shop and I used to buy some things from that shop. So मतलब grocery दुकान की जिनसे किनिबार थिला. So I bought all those things, all those expenses more जहाँ भी हैला, वो तमाम payment करिया को चाहिए. So he wants payment from me. ताकि मोर payment दरकार अछि. तो मुझे payment दे देली. I provided some cash. तम cash payment करी. But जदि मोर पे cash नथांता, ताले मुझे एटी कोन करथांती, UPI payment करथांती. तो मते पेमेंट दवार थिला फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. तो एटे पेमेंट जाउची, बट एग्जैक्टली पेमेंट गला केमती थ्रू कैश गला ना थ्रू यूपीआई गला, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे. तो अबे को बाटरे व्हाट इज द माध्यम, व्हाट इज द प्रोसेस? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज inheritance. I transferred the money, it is called as heredity, but how I transferred that money, it is called as inheritance. Got it? बुझियला? तो दीटा वर्ड आसला इनहेरिटेंस कौन गला हमर गला कोन ना वेरिएशन कोन आसला. तो ये जिंस सरला परे हमें देखिबा आज कोन टुडेस क्लास इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन, द कांसेप्ट एंड द प्रोजेक्ट. यस सर.
gene is segment of DNA. A part of already कहबी, so stay tuned for all those things. Now let me okay. So definition chapter definition तमे समस्त बुझी पाइलो एबा हम पढिबा का कथा ना concept of gene and DNA पिला माने DNA first अगर DNA को जे DNA पर gene को जिबा what is DNA ना DNA is the deoxyribonucleic acid. This one, DNA is nothing but a deoxyribonucleic acid. It is also called as a genetic material. DNA को हमें genetic material बोली कहूचे because ये DNA पाखरे कौन अच्छी ना DNA contains our genetic information and this genetic information कोट हुई जी gene रोइची और जो gene word टी अच्छी ये gene word को first time पाइन के describe करते लेके scientist ना होची बेटसन Johansen scientist थे जे ताको discover करते ले gene were discovered by Johansen. Just a second. Gene was nothing but the functional segment of DNA. Gene is nothing but the functional segment of DNA, or you can say what is gene. Now gene is the unit of heredity. Gene is the unit of heredity. So कौन करछि ना अभी का ट्रांसफर करछि कैरेक्टर को गोटे जनरेशन आउट जनरेशन को जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस और इट कैन कॉल्ड एज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए वी नो डीएनए भितर किछि सेगमेंट्स सब अछंती इंट्रोन एक्सॉन्स आर देयर एंड जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए यूनिट ऑफ हेरिडिटी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस सेम जिंस नाउ then the Mendelian ideas and some terminologies. Terminologies माने होची कौन ना पिला माने हमें ए चैप्टर रो जेमते गोटे गेम को बुझिया को देले तुम देखियो कि गोटे बॉल टी बाउंड्री क्रॉस करके जाउची तो बॉल टी बाउंड्री क्रॉस करी गला माने सेठी हमें ताको 4 भी कहि परिबा 5 भी कहि परिबा 6 भी कहि परिबा 7 भी कहि परिबा हाउ इट इज पॉसिबल गोटे बॉल टी बाउंड्री जदी क्रॉस करके जाउची जदी बॉल टी ग्राउंडेड रे जाईची माने ग्राउंडेड हे की जाईची तले ड्रॉप हे जाईची तले से 4 होबो तो से बॉल टी वाइड बॉल थिला ठीक अछि क्रिकेट टर्मिनोलॉजी बुझो वाइड बॉल थिला वाइड बॉल माने वन एक्स्ट्रा रन इज बीइंग एडेड आ बैट बजनी बॉल टी अपिका वाइड बॉल हे की मिडल जेंगे बाउंड्री पहुंच जाईची तो जदी 4 + 1 एटी मिसिला 5 हैला पर जदी बॉल टी नो बॉल अछि नो बॉल मींस सेठी अबिया गोटे एक्स्ट्रा रन तुम बैट्समैन को मिलिया को जाउची तो 4 + 1 = 5 होची जदि बॉल टी ग्राउंडेड न हे की प्रोजेक्टाइल मोशन ने जाई की बाउंड्री क्रॉस करची एआर रे जाई की बाउंड्री क्रॉस करची दैट इज 6 सेल अगेन से जो 6 रन की हे जे ताल जो अभी के गोटे नो बॉल हेथिबो ले एक्स्ट्रा 1 मार्क 1 रन से मिसी के 7 रन हम तो बॉल बाउंड्री क्रॉस कला तो 4 भी ही पड़ची 5 भी ही पड़ची 6 भी ही पड़ची 7 भी ही पड़ची तो माने हमको बुझियो पड़िबो कि को कंडीशन रे कोन जिंसटी होची. Exactly. So what are terminologies? Terminologies means there are some important terms which I am going to utter in the entire class. And all I want to let you know about the rules. To win a game, we must know the rules of the game, the rules and regulation of the game. The rules को हमें बुझियो पड़िबो. Until and unless we are aware of the rules, the terminologies of the game, we are not going to understand the chapter in very details. Yes or no? So there are some terminologies what is genotype, phenotype, gene, character, variations, monohybrid cross, dihybrid cross, ठीक है जी, polyploidy, euploidy, aneuploidy, haploid, diploid, all those things, all those terminologies, what is F1 generation, F2 generation, factor, ये सब जिनस हमें entire chapter थ्रू आउट में पढ़िबा. The chapter से word रा पढ़िबा को हेले से word meaning आगवा में जदी जानि थिबा it will definitely help us to understand the chapter in very easy way. Then in today's class we are going to discuss about the definition, the concept of gene and DNA, the pre-Mendelian ideas and the terminologies. If you remember पिलामाने आमे जो genetics term আজি पढुचे, who is considered as the father of genetics? कहाँ father of genetics बोली कहूचे? Let me know in the comment box. Who is
called as the father of genetics. कहाँ को हमें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोली कहूचे? यस, ग्रिगोर जोहान मेंडेल. जोहान स्पेलिंग के ठीक हबो पिला माने साइंटिस्ट का नाम लिखलेडा हमें जे तांको नार टिके स्पेलिंग टिके एपट सपोर्ट हेले भूल हेले तांको पे इटा असम्मान हबो. द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज द साइंटिस्ट ग्रेगर जोहान मेंडल. ग्रेगोर जोहान मेंडल एटा मन. ग्रेगोर जोहान मेंडल, यस. नाउ ये जो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर जोहान मेंडल थिले, ये आंकर एंटायर लाइफ रे जहां भी किसी काम करछन. देखिए बोर्न इन 1822 जुलाई 1822. ठीक है, एबे से जन्म हेतले. देन से रिसर्च करथले केबेठो केबे 1856 रू 1863. he has researched about the topic on Pisum sativum tea plant ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ, genetics ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ. He has published his information in the year 1865, जोटा कि एते लोकलोचनକୁ आसी पारि नथिले, ଲୋକମାନେ डिटेल्स जानि पारि नथिले. And in 1884 he died. 84-85 around he died. तो तांकर डेथ परे तां कामको सेति रिकॉग्निशन मिली नथिला, जोटा कि 1900 रे, in the 1900 century, early part 1900 year रे कोन हैला ना, तीन जण साइंटिस्ट आसिले, ह्यूगो डिव्रिस, कार्ल करेंस एंड वॉन टिसरमैक. एमाने मिसिके दे रीडिस्कवर्ड द मेंडल फैक्ट. तो मेंडल जो काम करी की जाइथिले, जो कामटा से बुझे की जाइथिले, जोटा को लोक पर से टाइम रे बुझी पार नथिले, ग्रहण करि पार नथिले. देयर आर सम लूपहोल्स जोटा को हम डिस्कस करि आगो जाइकी. why Mendel's work remain unnoticed, काहे कि मेंडल वर्क एते नोटिस को आसी पार नथिला. सेकंड, मेंडल को काम जेतो लोग काहे बुझी पार नथिले, इट वाज ahead from the generation. Suppose एबे जदि हमको 100 years before जदि someone will tell us that we can do video call, तो लोक मन तो एक्सेप्ट करिवे कि 100 years पूर्व वीडियो कॉल वाली जिनसे किस थिला. हम जान पाले कि ऑनलाइन क्लास का कांसेप्ट बिफोर कोविड, हाउ मच ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस ऑनलाइन क्लासेस, कि मु घरे बसी कि फोन रे बसी कि मु ऑनलाइन डिजिटल क्लास करि परि बोली. ए कांसेप्ट कोविड पूर्व 10 years पूर्व एमती किसी कांसेप्ट थिला कि हम पाखरे नहीं ना. तो ठीक से बड़ा जिंस सेते बड़ा हमके करटा मजा लागियो, बिना स्कूल को जाएंगे, बिना कॉलेज को जाएंगे, हाउ टू अवेल दिस नॉलेज. तो सेटा हम सेतले माने 10-20 years बिफोर जिंस कि हमको मजाक बोली लागुथिला, तो हम आपको हसर उड़े दे पाते. बट इबेडा हमको लागुची कि हां इट इज रियलिटी, इट इज पॉसिबल. ठीक समझे, मेंडल जहां काम करथिले एट दैट पर्टिकुलर टाइम, हिज वर्क रिमेन अननोटिस्ड बिकॉज़ डार्विन वाज पॉपुलर दैट टाइम. नेक्स्ट, मेंडल जो काम करले ताकू जो पब्लिश करले जो पेपर को, से पेपर रे पब्लिश जो हेथिला सेता बेले ऑलरेडी फ्रंट लाइन ऑफ पेपर रे डार्विन छाइथिले. जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आसिला, चार्ल्स डार्विन का कांसेप्ट आसिला, इवोल्यूशन, ए सब पार्ट ऊपर लोक जेमले गालापागोस आइलैंड एमटी से काम करथिले, सब जिंस बहुत मार्केट को आसिला as compared to Mendel's era. तो ग्रेगोर जोहान मेंडल लाइफ में जहां जहां काम करथिले 7 years जाय कि जो एक्सपेरिमेंट करथिले, सब से एक्सपेरिमेंट राग सब अननोटिस्ड हे रहि जायतिला, जोटा कि परे जाय कि लोकन पाखु आसिला, ये डिस्कवर हैला. एंड आज भी हमें मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोली कहूजे, बिकॉज़ सी जो एक्सपेरिमेंट करि जायतिले, से आज भी हमको इंस्पायर करजे टू नो ऑल दिस थिंग्स. रिमेंबर पिला मन, टुडे दिस इज 2025. ठीक अछि. आ मेंडल काम पब्लिश करथिले 1865. तो यू कैन इमेजिन 1865 टू 2025 वाले हमर केते ईयर हे गन सेटा अभी का. 35 plus 25 almost 60, 160 years, 260 years, 160 years पर हम से जिंसो पढु छै अछि केते इंपोर्टेंट हम से हेतो भाबो ना. So first, let us know about the concept of gene and concept of, yes, 160 years पर हम जिंसो पढु छै. तो हमें पढिबा concept of gene, concept of chromosome, concept of DNA. पिले माने to understand this chapter, you have to you need to have a clear idea about the cell chapter,
about the chromosome, about the nucleus, about the DNA, and also the biomolecules chapter which I mean nucleic acid kotha padhisil 11th class. So 11th class ro chapter cell, 11th class ro chapter biomolecules. ए data जिन concept तम clear रहिबो, then तम आगु genetics भलसे बुझि परिबो. And second, to make your work easy, let me show you what is chromosome. So human cell has about 2 meter long DNA distributed among its 46 chromosomes. We all know we are diploid cells. Yes or no? We human beings are diploid in nature. As a diploid cell, diploid cell contains 23 pairs of chromosome or 46 chromosomes. So what is this chromosome exactly? What is chromosome? The chromosome माने कौन? Cell जो divide is prokaryotic cell, eukaryotic cell. So the pro or u which have different prokaryotic cell, they don't have any kind of membrane bound cell organelles. ତାଙ୍କ ପାଖରେ nucleoid is ଅଛି, nucleus is absent. In eukaryotic cell, nucleus is there. Inside that nucleus, nucleoplasm is there. Inside that nucleoplasm, chromosomes are there. So what are those chromosomes? The chromosomes are considered as vehicle of heredity. So what are chromosomes? Chromosomes are a vehicle of heredity. Our chromosomes achandi, chromo means colorful and jome means straight-like structure. The colorful straight-like structure present achandi, jaha vitare moro DNA achi, ଆଉ ସେ DNA ଭିତରେ ମୋର gene ଅଛି, ଆଉ ସେ gene ପାଖରେ ସେ information ଅଛି, ଆଉ ସେ information को utilize କରିକି ଆମର protein formation होची, ଆଉ ସେ protein आगो जाइके different kind of enzyme, different kind of hormones, different kind of things produce करছে, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି metabolism ମୋ body ରେ fast होची, ବା slow होची ବା regulate होची. So ultimately gene has the features, gene has the characters, जी के आगो जाइके गोटे phenotype को control कर परिबो. Again, I'm using those two words, genotype and phenotype. So genotype माने कौन थिला पिला माने genotype माने ना हमरो भितरे केमिति arrangement है, the arrangement of genes, how the genes are arranged within us, ये वाला genotype. And what is phenotype? The external appearance of an organism. बाहरु केम देखा जाउची. By looking at me, you can tell me what is the skin color of mine, how my hair looks like, it is straight or curly, but you cannot say what is the blood group. You cannot say, you cannot assume my blood group by just looking at me. But you can tell me I am tall or I am dwarf. You can tell me I am thin or I am fat. This is external appearance that is called as phenotype. और जो internal gene जो arrangement है that is called as genotype. So again ये जो genotype control करছে phenotype को genotype कथा हमें gene कथा कहले gene अछि DNA रे. DNA is present in chromatin, chromatin is present in chromatids, and chromatids ago jai chromosome formation करछि. Yes, so Nali right answer. Genetic makeup of an organism is called a genotype, and phenotype means the external or morphological characters. Good. So chromosome कथा जो कहला है, a human cell has about 2 meter long DNA distributed among its 46 or 23 pairs of chromosomes. Every chromosome has a primary constriction that is called as a centromere, on the sides of which disc-shaped structures called kinetochores are present. If you observe a cell chromosome, then this center part is called as the centromere. Yes or no? The center part is called as the centromere. Yes, phenotype external character which you can observe directly by looking at the. Okay. If I draw a chromosome for you, then this part, this central part is called as centromere. And this centromere has a disc-shaped proteinous covering that is called as kinetochores. And these kinetochore part they are helpful to attach with the spindle fiber. The spindle fiber coming from the centriole or the centrosome, the spindle fiber attached. Then the chromosome it will help in gamete formation during mitosis, during meiosis, when the anaphase is going to occur. You know, in cell division, 11th class cell division part the cell division, cell cycle particularly about mitosis, about meiosis. Is of mitosis, meiosis mitosis with चारटा phase prophase, metaphase, anaphase, and telophase. ये जो anaphase part है the chromosomes get separated और the separate ही के अब divide ही के beta opposite fold को move करूँ. Yes or no?
In the metaphase, the chromosomes are aligned in the single equatorial plate, and in the anaphase, they start dividing and they move to the respective opposite poles. ये ସେମାନେ chromosome ମାନେ they are moving apart. ये जो moving apart होची, how it is being possible? By the help of spindle fibers. ये spindle fibers मैंने कोठ आसचंती ना जो centrioles मैंने जो अच्छे centrosome अच्छे जो astral rays इटो पठौचंती. ये जो spindle fiber मैंने आसिले, they will come and bind at the hook-like structure present at the mid of the chromosome that is called as the centromere. ये जो सेंट्रोमियर अच्छी है सेंट्रोमियर पाखे ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर तुम देखुछ ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर ना हेगला कोन डिस्क रो ना हेगला बट द डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज काइनेटिकोर और से काइनेटिकोर से द किया से अटैच हिजिबे ना स्पिंडल फाइबर अटैच हिजिबे एंड देन इट विल पुश अपवर्ड द लोअर वन इज पुश डाउन yes or no and समान मूव अपार्ट की सेपरेट हिजिबे दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोम क्रोमोसोम कौन शेप कौन तो देख पाइल नेक्स्ट स्लाइड हम देखिए कि क्रोमोसोम रो टाइप केते प्रकार अछि ये जो क्रोमोसोम्स माने अछंती ये एटा गोटे क्रोमोसोम हे परिबो दिस कैन आल्सो बी अ क्रोमोसोम so how do you know how many chromosomes are there this is also one chromosome this is also one chromosome but this one chromosome and this one chromosome with a different consila now it is called as monad why it is called as monad now because it is having a single arm आपरे गोटे जिंस अछि but it is called as dyad dyad means what हे गला ना आपरे dita chromatid अछि here it is a single chromatid and also a single chromosome but here it is single chromosome having two chromatids that's why it is called as dyad yes or no how to recognize a chromosome just look at the centromere one centromere means one chromosome ठीक अछि आ से क्रोमोसोम मोनाड स्टेज रे रहि परियो क्रोमोसोम डायड स्टेज रे भी रहि परियो देन now in the next part we are going to observe that based on the position of the centromere chromosomes are of four types in biology whenever we are dividing anything into any types always remember there is a basis of division on that particular basis we have divided this part just like we say pollination is of two types three types why it is two types why it is three types on which basis it is being divided now on the basis of types of agent it is using on the basis of types of pollinating agent केमती यूज हो जो से बेसिस हम लोग डिवाइड करते हैं यदि एजेंट यूज होची ताहले से हेगला क्रॉस पोलिनेशन यदि एजेंट यूज होनी से हेगला सेल्फ पोलिनेशन again केमिति एजेंट यूज होची बायोटिक और अबायोटिक से विशेष गुण हम लोग डिवाइड करछे तो बायोटिक हेगला ऑब्वियसली लिविंग बीइंग्स माने यूज होछन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने यूज होछन अबायोटिक कोइलेटी को माने यूज करना अबायोटिक हेटे एयर असिला विंड असिला so whenever we are dividing anything into any time always remember the basis of the division तो एठी हम कहली कि हम क्रोमोसोम को डिवाइड कर चारटा टाइप रे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्लियर तो सेंट्रोमियर पोजीशन कोड होचे सेही बेसिस रे हम ताको डिवाइड करछे तो सेंट्रोमियर पोजीशन जोड थिबो से क्रोमोसोम ना भी से हबो जदि क्रोमोसोम टा अछि सेंट्रोमियर टा हम सेंटर रे अछि पूरा मझी पार्ट रे अछि दीटा आर्म रो मझी रे अछि then it is called as which kind of centrosome which kind of chromosome it is called as metacentric ठीक अछि अब ना कोन हे गला metacentric रो माने पिला माने कोन हे गला देखो metacentric का मीनिंग कौन है ना middle centromere forming two equal halves yes or no तो दीटा equal arms production करछि ये है गला तमर p arm ये गला तमर q arm this is the p arm and this is your q arm और जेहु दीटा equal arm production है चंदी it is called as metacentric it is called as metacentric chromosome second asila submetacentric माने कोन हे गला ना the centromere is nearer to one end forming one shorter arm and one longer arm see look at this picture it कोन हे हमर एटी their internet connection is unstable am I audible can you hear me is the slide visible pilamani because it is showing that internet connection is unstable so just let me know okay okay got it okay
तो सब मेटासेंट्रिक से कौन कहले कि ना सब मेटासेंट्रिक रे क्रोमोसोम टा सेंट्रोमियर टा जस्ट टिके ऊपर को पळेछि को ऊपर को पळेछि ना मिडिल पार्ट सपोज एई जो पार्ट टा थिला যদি এই পার্টটা আবিকা এই ভলিয়া হেজিবো then it is called as submetacentric. This one is the middle part, middle lo little away what one end को जाइछि आ द्वारा गोटे शॉर्ट आर्म आ गोटे लॉन्ग आर्म फॉर्मेशन है ये हला तमरा शॉर्ट आर्म आ ये हला तमरा लॉन्ग आर्म that is called as submetacentric. Second is called as acrocentric. That means the centromere is close to its one end, forming one very short and one very long arm. ठीक है जदि हमें सेंट्रोमियर को मिडिल टिके ऊपर को उठेले से हे गला सबमेटासेंट्रिक लेवल जदि आउट के ऊपर को उठेबा देन जदि ए वाला डायग्राम जदि हम करिबा लाइक दिस पूरा कुनी आर्म गोटे पटे बनिला गोटे पटे विराट बड़ आर्म बनिला देन एटा में हे जो कोन एक्रोसेंट्रिक और लास्ट पार्ट जो टिलोसेंट्रिक मींस टर्मिनल सेंट्रोमियर ले माने टर्मिनल माने द एंड टर्मिनल माने होची एंड रे और जदि सेंट्रोमियर टा पूरा एंड रे अछि that is called as कोन टर्मिनल सेंट्रियल जैसे तो हम कहबा टिलोसेंट्रिक मन देखो T for टिलोसेंट्रिक T for टर्मिनल जेमति M for मिडिल रे थिला M for मेटासेंट्रिक मिडिल माने मझी रे अछि मेटासेंट्रिक आ सभा तळे अछि बा सभा ऊपर अछि टर्मिनल एंड रे अछि इट इज कॉल्ड एज टिलोसेंट्रिक क्लियर तो मन रखि देला तमे क्रोमोसोम चारि प्रकार रहइबो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर it can be metacentric it can be submetacentric it can be acrocentric it can be telocentric about different cells la V shape L shape J shape or I shape पर different type ର हेतरि okay so এই जो chapter ଆମେ पढुचे principles of inheritance and variation in this very chapter all the things are connected with these chromosomes this DNA this gene alleles a part हम सब पढियो जाउछे what is gene what is allele what is chromosome what is phenotype what is genotype what are different kind of cross कौन ना अछि what is back cross what is test cross what is reciprocal cross so ए जो terminologies आज रो क्लास रे all I am going to discuss about the terminologies so that the next onward chapter the next onward classes are going to be smooth and going to be easy for all of you okay now the second part is about the DNA you remember I it पढितले previous slide तुम कहितले कि today's class is all about definition concept of gene and DNA तो हमें gene कौन DNA कौन ए विषय पढिबा तो क्रोमोसोम गोटे बेसिक आइडिया तुम पाई गला व्हाट इज क्रोमोसोम क्रोमोसोम परे हमें कौन देखिबा अबिका क्रोमोसोम परे आसला हमर about the DNA so what is the difference between submetacentric chromosome and acrocentric chromosome submetacentric and acrocentric रा difference हो जेति कि submetacentric रे chromosome centromere टा middle लो just टिके ऊपर को थे ठीक अछि मेटासेंट्रिक मींस मिडिल रे अछि कि हमर सेंट्रोमियर जदि मिडिल लो टिके ऊपर को उठी जाय सबमेटासेंट्रिक the submetacentric रो लेवल रो सेंट्रोमियर आहुर ऊपर को पड़े जी that is called as acrocentric yes or no सेंट्रोमियर पोजीशन ला स्लाइड ही जाउ सिंपल जब नोट पीएस स्केल देखियो पीएस स्केल 0 टू 14 जाई अछि तो 0 टू 14 जाई कि मझरे आसला के 7 इज न्यूट्रल 7 नो पछु आसीले 7 टू टुवर्ड्स 0 आसीले तम एसिडिक पाइबो 7 नो जतम अबिका 14 रो जतम बेसिक पाइबो पते तो सही जिंस आइला देख 7 नो जो टिके पछु आसीची तले सी अबे हे जिवो स्लाइडली एसिडिक यदि आहुरी पछु जिवो तले हे जिवो हाईली एसिडिक कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बॉडी बॉडी जिवो एठी अबिका ठीक सही बडा सेंटर में पोजीशन टा अप एंड डाउन हे जिवो मिडिल ले अछि सेंटर अछि सेंट्रोमियर जदि मझिरे अछि तले इट इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक तो मेटासेंट्रिक रा पोजीशन टिके ऊपर हो जाईची so that दी प्रकार आर्म मॉडल not equal type one is smaller one is larger or longer that is called as submetacentric the tar thau टिके ऊपर को जाउची extreme small and extreme longer it is called as acrocentric I hope बुझी भाई जिनसटे ये बस पोजीशन को लेके डिस्कस कराई छी नाउ तो न्यूक्लिक एसिड DNA RNA both are there are the building blocks of genetic material
DNA is the genetic material in most of the organism, and जो जगह DNA absence अछि, in the absence of DNA, RNA can somehow become the genetic material. RNA is the genetic material in some viruses, and RNA mostly functions as messengers. जो RNA ର मुख्य काम कौन होची? RNA work as messenger हिसाब से आगु जाई काम करची. Then okay. तो हमको ये जो DNA, RNA ये सब concept को कहीं की कहोचे? Because all these things are going to be useful in the entire chapter. Okay. Now, if you look at the structure of DNA कहाँ बने तेरे इसी ना DNA are polynucleotides are the polymer of nucleotides. ये सब चिला हमारा basic concept biomolecular chapter दे. DNA हो बा RNA हो, all are polynucleotides. Poly means many, and nucleotides are nothing but the polymer जो मैंने कहा बने तेरे इसी nucleoside and ତା ସହିତ phosphate group ଅଛି. ତ nucleoside phosphate आपस में मिଶି कौन बनेइछन्ती ना polymer of nucleotide बनेइछन्ती, ताको polynucleotide कहउछि. तो DNA, RNA all are polynucleotides. Then ये chapter तम next chapter आसीबो principles of inheritance and variation chapter complete होला परे आसीबो molecular basis of inheritance. जब details से देखिबो कि what are those things, what kind of sugars are there, these are the ribose sugar, deoxyribose sugar, which kind of base is nitrogenous bases are there. There are two types of nitrogenous bases, purines and pyrimidines. Again in that purine, adenine and guanine are there. Again in that pyrimidine, cytosine, thymine, uracils are there. This is जिनसे तमे already biomolecular chapter रे पढ़ी सारिछ, and again you are going to repeat the same thing in the molecular basis of inheritance chapter. Done? Okay. So these polynucleotides कहाँ भी नहीं सब theory चंदी phosphate group केमते आछि, और nucleotide has three components: the nitrogenous base, the pentose sugar, the phosphate group. The pentose sugar भीतर क्या आछो अबिका pentose sugar भीतर ribose थिबो RNA पाखेरे, deoxyribose थिबो DNA पाखेरे, और ये deoxyribose ribose ए माने आगु जाई convert कोठी ना हमर DNA RNA formation करछन्ती. The nitrogenous base भीतर पुनी purine आसीबो, pyrimidine आसीबो, purine adenine, guanine, cytosine, thymine ए सब जिंस भी आसीबे. तो तमे गोटे क्लियर कट आइडिया गोटे ब्रीफ आइडिया तमे एठू पाई परिबो. तो थाइमिन कोन हे गला प्रेजेंट ओनली इन डीएनए एंड यूरासिल ओनली इन आरएनए, ए सब पार्ट तमे आगो देखिबो कि को जगह प्रेजेंट अछि, गोटे बेसिक आइडिया पाई खेले ऑब्जर्व करथौ. तो बेसिकली जो डीएनए अछि, जो डबल हेलिकल स्ट्रैंडेड डीएनए अछि, से डीएनए रो गोटे फंक्शनल सेगमेंट को हमें जीन बोली कहै. तो डीएनए भीतर कोन अछि नाइट्रोजनस बेसेस आर देयर, ସେମାନେ आपस रे स्टार्ट କରିକି ଅଛନ୍ତି, ବଣ୍ଡ ବନେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ladder ର step ଯେମିତି ଥାଏ ସେଠିର step ଥାଏ, ସେମିତି adenine thymine ସହିତ base pair କରିଛି, guanine cytosine ସହିତ base pair କରିଛି. ये adenine thymine ରେ ଦିଟା double bond ଅଛି, जो ଦିଟା हाइड्रोजन बॉन्ड अछि, guanine cytosine ରେ तीनटा हाइड्रोजन बॉन्ड अछि. तो एमान जो अबिके स्टैक अपन ईच अदर हेके अछंती, एई जो फंक्शनल सेगमेंट को आमे गोटे जीन बोली कहउछे. देन ये जो जीन हैला, ए जीन हैज सम फीचर, ए जीन पाई किछि फीचर अछि. ए जीन जतला बे मैसेंजर हिसाब रे आगु जाउछि, तो मैसेंजर ता जे पहुंचबो का पाखे ना राइबोसोम पाखे पहुंचबो. राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, एंड राइबोसोम बेस्ड ऑन द message coming from the DNA say accordingly amino acids manu ekati kariba. Remember this thing, our body, we all are organisms. Organisms means they are made up of organ systems. Organ system means they are made up of organs. Organs are made up of tissues, and tissues are made up of nothing but cells. But how is this cell made up of? Cell ti kothe tiari hochi? The cells are made up of biomolecules. Yes or no? That is proteins achi, lipids achi, carbohydrates achi. So ये जो proteins asila, proteins is the building block of the cell. ये जो protein, this protein is nothing but the amalgamation of a bunch of amino acids which are joined together through peptide bonds to make a polypeptide chain. If you look at protein, protein को देखिए पिला माने protein पाखरे कौन अछि ना किछ नै, group of amino acids, bunch of amino acids. These are just joined by some single peptide bond to make a polypeptide chain, and that polypeptide chain is nothing but the protein. So again ये जो polypeptide chain बनिछि amino acid को नहीं बनिछि, तो इसे amino acid माने को sequence से bind होछि. For example, हम English alphabet रे A to D की Z जाएंगे 26 टा alphabet अछि. Yes or no? But if I look at the name of all the 150 crores people of India, समस्त ना अछि,
एंड समस्त ना जब इंग्लिश रे लिखिया स्टार्ट करी समस्त ना से 26 टा अल्फाबेट रे दिसुनो इफ आई लुक एट दिस चैट बॉक्स ये जो चैट बॉक्स तम मान ना एठी लिखाई छि पिला माने जो माने जे क्लास रे प्रेजेंट अछ जेमती मोनालिसा शीतल सोनाली again the Gregor Johann Mendel ठीक अछि ये जो मानिनी विजय लक्ष्मी जो पिला माने क्लास करू एठी संतोषिनी सौम्या दिशा शीतल श्रुति जगदीश ये जो पिला माने सब जॉइन करला फैजन संगीता ये समस्त ना जे देखिबी all name are coming from this 26 alphabets only but say 26 alphabet माने केमिति आपस रे amalgamate करछन केमिति आपस रे मिशिछन दी कहा परे से आसी for example if I consider my name is Devasis so 26 alphabet भितर D आगो आसीला then तापरे E then तापरे B then तापरे A then तापरे S then तापरे I then तापरे S yes or no if I talk about Gregor Johann Mendel, the first G, then R, then E, then G, then O, then R. तो केमिति आछि ना वाला सपोज मु क्लास के किछि कहली मु डिटेक्ट करली तमन तो तुम कॉपी रे लिखि दउछ तो मु गोटे वर्ड ते प्रोनाउंस करले से वर्ड के सुनी कि तमे तार कोन कोन स्पेलिंग हे पर तुम जब लिखुछ ठीक सेमति डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड को नहीं कि सेम 20 टा अमीनो एसिड को नहीं कि ताको डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मिसे कि कोन फॉर्मेशन करा होची गोटे प्रोटीन रे तयारी करा होची और प्रोटीन बनिया पई कि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करिया पई कि अमीनो एसिड्स मन को एकाडी रखिया पई कि all we need a sequence or message and that message is coming from none other than the DNA. Yes or no? We all know protein factory in the body in a cell is nothing but the ribosome and ribosome to make this protein it requires an message और जो मैसेज से रिक्वायर होची मैसेज टी दउची के ना डीएनए दउची डीएनए को फॉर्म में मैसेज को दउची इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए ये जो आरएनए मैसेज को कैरी करी कि आनिची ऑल्स ऑफ वे फ्रॉम द न्यूक्लियस नै कि आसीची से मैसेंजर को बेसिस करी कि तार जेनेटिक कोड को देखि कि से कोडन हिसाब रे एंटीकोडन वाला टीआरएनए से मैसेंजर अमीनो एसिड को धरि कि नै कि आसीची और से अमीनो एसिड जो रहिला से मन आपस में बॉन्ड बने के आगो प्रोटीन फॉर्मेशन करछो molecular basis of inheritance chapter पढ़िबो पिला मन सेतबल तम जानि परियो what is replication what is transcription what is translation what is the central dogma of life details तम इस part रे पढ़िबो which is one of the most interesting chapter of your biology class molecular basis of inheritance बट से क्लास को जीवा पूर्वरु हमको एबे किछ टर्मिनोलॉजीज बुझिया पड़िबो ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को बुझिया पड़िबो और से इनहेरिटेंस रे केमिति जीन माने हेल्प करबे से पार्ट को देखियो पड़िबो डन now the nitrogenous base is linked to the pentose sugar in glycosidic linkage bond ऐसे formation है कि अच्छे and then final जो देखिबो गोटे DNA पाखे रे जो polynucleotide chain अछि it has the nitrogenous base the sugar the phosphate group and the nucleotide ये सब मिसी के बने जो न्यूक्लियोटाइड और ये deoxyribonucleotide आगे मिसी मिसी कोन बने छी polynucleotide chain formation करछि ओके तो हमें गोटे बेसिक आइडिया पाई गले गोटे कांसेप्ट पाई गले अबाउट द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स पढ़सिला परे हमें देखिले कोन प्रीवियस पेज को जिबी दिस वन उनानी सर दिस वन और दिस वन previous page means this one or ये तो मैं ऑलरेडी पढ़िबा आगो जाय कि जो स्टेट क्यों ये जिंस आगो आसीबो हां तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तमे देखिलो तो आज हम टॉपिक होची कोन आज हम काम होला कोन हम ए जो पार्टटा पढ़िले पिला माने already I have given you the definition of the part, the concept of the gene, the concept of the DNA. Now we will discuss about the pre-Mendelian ideas. As the pre-Mendelian ideas को जीवा पूर्वरु, let's discuss some terminologies. So now it's my work to let you know about the different terminologies, different words used in this segment.
The first part is heredity. Second one is inheritance. Third one is variations. Fourth one is gene. Fifth one is alleles. Sixth one is about characters. Seven one is trait. Eight one is your genotype. Nine one is about phenotype. Genotype, phenotype, trait. ये सब जिनसे हमें one by one पढ़ना. So heredity I have already discussed. Heredity means the transfer of characters. What is heredity? The transfer of characters. Transfer of characters from one generation to next generation. From parents to progenies. Then inheritance. Inheritance nothing but the process. The process of transfer of character. It is called the inheritance. Variation. Variation means the degree of change. Degree of change in between two individuals. In between two progenies. Two progenies coming from same parent, or any two individuals, belonging to same species. We all are Homo sapiens. Yes or no? We all are Homo sapiens, but all the Homo sapiens are not look alike. हमें क्या समान देखिए को नहीं. If you look in India, India बहुत diversity अच्छी. If you look at the different people of India, if you go to north side, northern region of India, in the Punjab, Haryana, Rajasthan, you will see taller persons. डेंगा डेंगा मनुष्य सब थिबे. पंजाब जे देखियो सब देश राइट सब थिबो पगड़ी पगड़ी बांधिबे तांको अलगा appearance आसीबो. If you go to northeast part of the country, northeast part जो आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सेपट पार्ट जो तुम नागालैंड सेपट पार्ट देखि आसीबो लोकन हाइट टिके कमी जाइछो सेपटे एंड सेमानकर आखि सेमानकर अपीयरेंस सेमान फेशियल एक्सप्रेशन टिके चेंज आसीबो आज कम्पेयर नॉर्थ साइड. तो तुम ईस्ट पार्ट को पळे आसीबो, देन तुम साउथ पार्ट को पळेबो, सबुट तुम डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो देखो. स्किन कलर रे चेंज आसीबो, देन बॉडी हाइट रे चेंज आसीबो, फेशियल एक्सप्रेशन रे चेंज आसीबो. These are all diversities. ठीक अछि. If I compare an Indian with an American person, what American person, what British person, the Indian person is the comparability. Again, you will see some variations. So variation means a degree of change. The American person is also a Homo sapiens. I am also a Homo sapiens. But we two are not look alike. So तुम IPL देखो तो पिला मन IPL जो टीम माने खेलुचंती किछि इंडियन प्लेयर होनी किछि फॉरेन प्लेयर होछन. The foreign player are quite distinguishable from the Indian players. Man clearly jana padichi because it variations asila. Class 11 10:45 na sorry. Next, gene. What is gene? Gene is the functional segment of DNA. Gene is the functional segment of DNA, or you can say gene is the unit of inheritance, or it is called as unit of inheritance. Now, alleles. What are the alleles? Now, alleles are the alternative form of a gene. Alleles are the alternative forms of a gene. The gene alternative form का मैं कौन कहूँ allele बोली कहूँ.
माने बुझ अधिका जीन कंट्रोल करछ हम कैरेक्टर लिसन नो कैरेक्टर कहले का बुझ व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर ना कैरेक्टर्स आर द डिस्टिंग्विशेबल फीचर which help to identify or distinguish or differentiate between two individuals. For example, let me tell you कि मुझे आईपीएल एग्जांपल देली कि आईपीएल रे तमे देखि जानि परछो कि अच्छा who is the Indian player and who is the foreign player. How do you recognize all these things? By looking at some characters. And what are the characters? In the height is a character, color of the skin is a character, having the blood group is a character. Listen, the character माने कौन है? Character होची ଗୋଟେ particular ଜିନିଷଟି जो behalf रे जो basis ରେ ଆମେ दिटा individual को differentiate करूछे. If the height of the character hella, then a character with the alternative form as well that are called as traits. One is the tall, second one is the dwarf. Both are contrasting trait present in a single character. Then the call it skin color. It can be fair, it can be dark. Yes or no? If I look at the shape of the seed, it can be round, it can be wrinkled. If I look at the position of the flower, the character is the position of flower. as a position ଟା କୋଉଠି ହେଇପାରିବ it can be axial it can be terminal ये axis ରେ ବି ହେଇପାରିବ ये terminal part ରେ ବି ହେଇପାରିବ ନା the character is nothing but the distinguishable feature identifying feature जे कि differentiate କରୁଛି ଦିଟା individual को एई character विशेषता हम ताको differentiate କରି पारछे जोटा हम observe କରୁछे phenotypically बाहर हम तो देखुछे और character ର alternative form हम कहउछे trait को character कौन सिला हमर distinguishable और identifying feature distinguishable or identifying features and are the alternative form to the two alternative or contrasting forms of a character is called as trait. Now, if you see what is genotype, genotype means the genetic makeup. Genotype is nothing but the genetic makeup of an organism. गोटे organism ର genetic makeup को ଆମେ कौन कहउछे genotype बोली कहउछे and at the same time if you look at the phenotype then phenotype हेगला कोन ना external appearance or the morphological appearance morphology माने बाहर केम देखा जाउछे external appearance of an individual of an organism. तो पिलामन these are the basic terminologies जदि एती छाडी हम आउ आगो जाई परिबा. Yes, internal appearance, external facial appearance, or morphological appearance. Yes. A distinct morphological and physiological features of one individual is called character. The expression of character is called as trait. Okay. Now, the terminology एतिक नहीं आहुरी बहुत सारा terminology अच्छी यदि आपको मैं clear कर दे कि आउटे लिखिबा जिंस लगा आसीबा बिया कोन कोन ट्रेन नंबर टर्मिनोलॉजी हमें लगा कहा था अभी जो नोट वाला अच्छा dominant and recessive dominant then recessive then monohybrid cross then dihybrid cross then polyhybrid cross then we can also discuss about back cross
टेस्ट क्रॉस ना और टर्मिनोलॉजी अच्छी जेमति कि हमर देखिए जीन कौन है गला क्रोमोसोम कौन है गला कैरेक्टर कौन है गला ट्रेट कौन है गला एलील कौन है गला लोकस का हमें कहूचे देन मेन टर्म जेटा हम छाड़ देछि वन इज होमोजाइगस देन हम देखिबा हेटेरोजाइगस homozygous, heterozygous. If we talk about all those things, then these are the basic terminologies. ଯେମିତି କି dominant. ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଯଦି dominant ମାନେ କଣ? Dominant ମାନେ when a character is expressing itself. ଯେ ଜଣେ ନିଜକୁ express କରିପାରୁଛି. It is the phenomenon. It is the process of expressing itself. Its oneself is called as dominant. And ଯେ ନିଜକୁ express କରିପାରୁନି, ଯେ ନିଜକୁ suppress କରିକି ରଖୁଛି, repress କରିକି ରଖୁଛି, that is called as recessive. So Mendel a dominance को निगड़ law this is law of dominance और Mendel एक कथा कहते कि out of pair of contrasting characters one is able to dominate itself, one is able to express itself, that is called as dominant, and the other one remains suppressed and that is called as recessive. तो ये जो मेंडल जो पार्ट देखिए डोमिनेंट डोमिनेंट रे में कहा था देखिबे ना डोमिनेंट रे माने आसला एटी पिला माने कि the expressive one is dominant and the suppressed one is called as recessive. Monohybrid cross. When a single character, when a single character having two alternative or contrasting traits is being considered, it is called as monohybrid cross recessive. যদি আমি গোটে সিঙ্গেল ক্যারেক্টার উপরে ফোকাস করিবা that single character is having two alternative or contrasting traits then ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ stable ରଖିବା at that time it is called as monohybrid cross. In dihybrid cross di means two ଆମେ ଦିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୁ କନସିଡର କରିଛେ dihybrid means that two characters are considered, two characters are considered and what are those two characters? The two characters ହେଇଗଲେ କୋଉ ମାନେ ପିଲା ମାନେ one is the shape of the seed, shape of the seed, and second one is the color of the seed. Shape of the seed and the second one is the color of the seed. तो से seed रा shape केमतिया हबो seed रा color केमतिया हबो ये हेगला तमर डाइहाइब्रिड क्रॉस बाकी सब समान अछि से कलर सेट डिफर करछे आ यदि पॉलीहाइब्रिड क्रॉस देखिबा तो पॉलीहाइब्रिड क्रॉस केला माने एठी more than two characters जे दीटा कैरेक्टर रो अधिक कैरेक्टर को हमें एठी अनस्टेबल रखी छे से माने ने हमें क्रॉस कर इट इज कॉल्ड एज पॉलीहाइब्रिड क्रॉस. Yes, contrasting means opposite character. ठीक ओके तो तमे जानिलो कि डोमिनेंट कोन रिसेसिव कोन मोनोहाइब्रिड कोन डाइहाइब्रिड कोन पॉलीहाइब्रिड कोन गोटे एग्जांपल नै कहूची मोनोहाइब्रिड रो एग्जांपल कहूची पिला माने मोनोहाइब्रिड एग्जांपल हम जे देखिबा एठी का कथा कि मेंडल देखले दीटा प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी एठु आसिला कैपिटल टी एठु आस्तिला पिला माने स्मॉल टी आ जेबे कैपिटल टी स्मॉल टी आपस क्रॉस करले आंसर आसिला कोन एठी कैपिटल टी स्मॉल टी ए जो कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट आस्तिला मेंडल आर ना देथिले कोन दिस इज कॉल्ड एज द व्हाट मेंडल आर ना देथिले
So please explain dominant and recessive. Like dominant होची किए जे निज को express कला देखो एपटे. तो मेंडल जेटा प्लान नेचन. This is homozygous tall. This is homozygous dwarf. Suppose character is height. We are considering height as a character. ये height दी प्रकार trait देखौची गोटे हला tall आ गोटे हला dwarf. ये tallness ପାଇଁ की responsible किए capital T, dwarfness ପାଇଁ responsible किए small t. Listen. এই जो পার্টটা ছিল এই যে মেন্ডেল ফার্স্ট নিলে কো প্যারেন্ট কো জেনারেশন দিস ইজ কল্ড অ্যাজ প্যারেন্ট জেনারেশন ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଅଛି you know parent after doing meiosis will produce gamete generation तो ये कौन है ना gametes of parent generation और जो parent generation है gametes में आपस में fuse करेंगे let's say this is your male plant and this is your female plant male will produce male gamete female will produce female gamete and when the two dissimilar male gamete and female gamete will fuse together then the structure is called as then the thing is called as zygote and this zygote is converted into the second generation or the first generation it is called as F1 generation. So zygote formation is capital T small t आपस में मिसी कौन बनाइले capital T small t ये मिसी बनाइले F1 generation the first filial one generation. এই जो প্ল্যান্ট আছে যে মেন্ডেল কোন দেখিলে এটি না মেন্ডেল নেছিলে টল প্ল্যান্ট মেন্ডেল নেছিলে ড্ୱାର୍ଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଯେବେ ଦିଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ମୁଁ କ୍ରସ କରୁଛି ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟି ଆସିଲା the progeny of this plant ये आगो जाएगी कौन एक्सप्रेस करला ये टॉल एक्सप्रेस करेगा को it will show one of the character one of the parent character it show कला तो ये भी टॉल ही के आसिला এই जो टॉलनेस एठी आसीची कैपिटल टी स्मॉल टी भितरे तो ये हेगला हेटेरोजाइगस एमाने हे गले होमोजाइगस होमो माने सेम ए भी होमोजाइगस सेम बट एठी गोटे कैपिटल टी अछि गोटे स्मॉल टी अछि आको हम कहबा हेटेरोजाइगस तो ये जो हेटेरोजाइगस पेयर हे के अछंदी हेटेरोजाइगस पेयर दीटा को जो प्रेजेंट हे रहिले आको जो पिला माने कोन हैला ना one is able to express itself and that is called as dominant the other one is not able to express itself it is called as recessive right now let me tell you this is remote and this is the stylus pen. Now you can see in this camera, you can see this part, key both are present together. Yes or no? You can see both the two. But when I bring that stylus pen behind to the remote, you can see the remote only. You cannot see the, but you cannot see the stylus pen because the remote is expressing itself towards the camera. Remote target जेहेतु अच्छे camera अगर निजको express करी पारची, but stylus pen जो पतला अच्छी thin अच्छी, it is unable to express itself and remains suppressed. So remote आरा expression को marking करे नलची, तो masking करे तुझे, so that ये है गला dominant और ये है गला recessive. Yes, for example, you can see this water, bottle full of water. You can see half full of water. এই যে ওয়াটার টি তুমি দেখি পারছো because the bottle is transparent water is colorless তো তুমি আকু দেখি পারছো তো water এটি লিকুইড আছে if I put some sugar যে কি চিনি আনি মই পানি রে পকেইবি 1 spoon of sugar মই পানি রে পকেইবি and then vigorously shake करली চিনি थिला solid पानी थिला liquid जब से चिनी को पानी रे पकेई देली after some time what I'll see only water तो चिनी पानी रे रहितिला अछि बट चिनी तार एक्सप्रेशन ता शो करि पर चिनी जो सॉलिड नेचर चिनी दिला से निजो शो करि पानी चिनी आज रे मेल्ट हे जाई कोड में ब्लेंड हेके रहि जाय बट स्टिल ये चिनी ता धर्म बजाय रखिची ता प्रॉपर्टी मेंटेन रखिची एंड जेबे से सेग्रीगेट करिवा गु जाय कि से फोर द इंडिविजुअल पार्ट को फळे आसो एडु लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करी एठी आसी तो कौन तो कहलता माने कि नॉर्मल पानी और चीनी पानी दो दे मेल्ट लुक लाइक सेम देखा जिवे बट नॉर्मल पानी इज टेस्टलेस बट जो सुगर वाला पानी चीनी वाला पानी दा सियो बिकॉज़ तुम मीठा टेस्ट करियो तमन ये ब्लेंड हे के भी तार प्रॉपर्टी मेंटेन रखछि तो नॉर्मल पानी को इवापोरेट करबी चीनी पानी को इवापोरेट करबी नॉर्मल पानी पूरा उडी जीव पर चीनी पानी रो पानी उडी गेला पर चीनी फोन से जगह रहि जीव तुम देख रही जो किछि मीठा देखितो के जो लवंग लता खीर गजा खस्ता गजा से मीठा ऊपर की सुगर कोटा है क्या व्हाइट कलर चिरेटा सुखी की लाइट ये सुनो तो यही पार्ट में कौन जान ले कि जो डोमिनेंट रिसेसिव रे तो one is able to dominate itself and the other one remains suppressed the expressed one is called as dominant while the suppressed one is called as recessive I hope बुझी पाछिबो
parental gamete, yes, parental gamete means ए जो gamete माने parent generation नु आछन। ठीक है, ये वाला parent generation, parent generation आगु जाई कोन करछि ना अबे gamete formation करछि, these are the gametes of the parent generation और जिबे माने आपस में मिसी कोन बनले F1 generation मिसी। एबे जो F1 जनरेशन अछि ये भी आगु जाई कोन फॉर्मेशन करिवो गैमेट फॉर्मेशन करिवो आ एठी दी प्रकार गैमेट बनिवो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बिकॉज़ इट इज हेटेरोजाइगस इन नेचर और जे हेटेरोजाइगस अछि से दी प्रकार गैमेट फॉर्मेशन करिवो ओटे कैपिटल टी स्मॉल टी ए जो कैपिटल टी स्मॉल टी जो मिसी की थिले हम जो देखले स्मॉल टी का तार एक्सप्रेशन को हरई बसिछि से निजो को एक्सप्रेस करि पारुनी कैपिटल टी टा एक्सप्रेस करला बट स्टिल पिला माने जब कैपिटल टी स्मॉल टी को तार से सेल्फिंग करौची तार बोले आ गोटे प्लांट को नहीं क्रॉस करौची ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी दबो और कैपिटल टी मिसी के हे गले टॉल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी मिसी के अगेन हे गले टॉल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी मिसी अगेन हे गले टॉल प्लांट but this small t it remain as the dwarf plant. One is the male, second is the female, and you can see in this section that these three are tall plant. It intako a tall plant, and the one remaining will become the dwarf plant. The three are tall, and one is the dwarf one. This one, तो ये हम फीचर देख ले 3:1 रेशियो हमें ए टू ही पाइले स्कूल बेला कथा मन पक्का स्कूल बेला हम देखले कि 3:1 रेशियो आसला इट इज कॉल्ड एज फिनोटाइपिक रेशियो तो मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस रो F2 generation the phenotypic ratio is nothing but 3:1. The three plants are tall and one plant is dwarf. The Mendel A2 attention is like how it is being possible. In the first segment I have taken one tall plant and one dwarf plant and all those plants which I get is all at tall. Yes or no? All at tall. But when I cross this tall plant with this tall plant once again, ତାଙ୍କର ଯଦି selfing କରୁଛି then I am going to get three tall plants and one dwarf plants. So eight middle data law is law of dominance and law of segregation. Now the next class is details of So other class ideas like to give you a quick revision of the terminologies, the concept, the pre-Mendelian ideas. Dear students, Mendel 1856 to 1863 ତାଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସବୁ କରିଥିଲେ ବଟ୍ କଣ ତା ପୂର୍ବରୁ କେହି ବି କେବେ ଜେନେଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି ନା କେବେ ଆମେ ଜେନେଟିକ୍ସ ଜାଣିନେ ଭାବି ଦେଖ कि ଆମେ ନ୍ୟୁଟନ ଆମକୁ ଗ୍ରାଭିଟି ବିଷୟରେ କହିଲେ ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ କେହି ବି କିଛି ଭାବି ନଥିବେ କି ଏମିତି ଗ୍ରାଭିଟି ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଏ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ବର୍ଷା ହେଲେ କାହିଁକି ତଳକୁ ହିଁ ପାଣି ପଡୁଛି କଣ ପାଇଁ ଜିନିଷଟି ହଉଛି एग्जैक्टली सो ए प्री मॉडर्न आइडिया में कहा था देखिबा ना जो एग्रीकल्चरल फील्ड रे when you see the agricultural field तो एग्रीकल्चरल फील्ड तो को काल हि आसुची एग्रीकल्चर लाइन हमर चलची काम तो जो एग्रीकल्चर फील्ड रे हम जो डोमेस्टिकेशन करूथिले कि हम जो हाइब्रिड फॉर्मेशन करूथिले गोटे प्लांट से तो क्रॉस कराउथिला गोटे नुवा प्लांट के बनथिला बस ये जो फार्मर्स माने आगो डोमेस्टिक एनिमल्स माने जो फॉर्मेशन करूथिले ताकर यूज अनुसार जर्मन शेफर्ड तो गोटे डॉग का सहित गोटे पटे शेफर्ड टी पटे से बेसी जो गोटे मिसी को कितने फॉक्स हे गला और डॉग हे गला माने क्रॉस करे कि जो नुवा ब्रीड फॉर्मेशन होतिला साहिवाल काउ जो अछि इंडिया रे तो ये सब जिंस केमिति बनितिला ना डोमेस्टिकेशन कराई जो हाइब्रिडेशन कराई कि ए प्रोसेस सब तैयारी होइतिला बट सेतले सब अनसाइंटिफिक वे रे काम करा होतिला साइंटिफिक वे जणा नथिला मेंडल ऐसी जिंसटी को जणाइतिला बट मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोली कहूचे बट मेंडल जीन कोन जान नथिले ही यूज्ड टू नो about factor तो मेंडल जीन जगह रे कोन कहउतले फैक्टर बोली कहउतले परे में जाइले कि दैट इज कॉल्ड एज जीन जब 1909 रे ये तक बेटसन डिस्कवर करले जीन को 1909 रे हम जाइले कि ओके दिस इज कॉल्ड एज जीन तो एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी हैला क्रोमोसोम जानिले माइटोसिस जानिले मेयोसिस जानिले गैमेट फॉर्मेशन जानिले देन हम पे इहा जिंसटी जानिया तो मेंडल वाज वे अहेड ऑफ हिज जनरेशन तो बहुत किछ काम ताको जनरेशन पूर्व करि कि जाइथिले एंड हमु जणे कि जाइथिले ना ओके संतोषिनी आउ टिके पार्ट अछि हम देखि दबा टर्मिनोलॉजीज रे ओके तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस रे मेंडल कहा पर काम करथले ना पी प्लांट पर काम करथिले
पी प्लांट हमें कहा को पाइसम सटाइबम आ पछी स्टोरी अछि व्हाई पी प्लांट मेंडल काहे कि पी प्लांट ही नहीं मेंडल काहे कि और किछ प्लांट नेलेनी कौन पे नेलेनी व्हाई पी प्लांट ना पी प्लांट इज अ सीजनल प्लांट our lifespan बहुत छोटा it has bisexual flowers and though it has bisexual flower it can do both self pollination and cross pollination both से कर परिबो तो ए सब जिंस का मेंडल सेठी नोटिस करले से टाइम रे तो गेगो जोहान मेंडल मोनास्ट्री थिले तो ये जो टर्म जाको आउ से रीड कर दे पिला मन देखि दे पार्ट रे को जेमि जेनेटिक्स हला कोन स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी ऑफ हेरिडिटी स्टडी ऑफ वेरिएशन of characters or study of genes and chromosome it is called as genetics just have a quick look at the part gote thor khali read kore dekhi dio and I'll discuss you about the so as you can see in this part genetics inheritance variation character trait I hope tame jinso dekhi parcho if you have any doubt you can ask me in the chat box see. So genetics is a study of inheritance, heredity, and variations of characters of study of genes or chromosomes. Inheritance is the transmission of characters from parent to progeny. It is the basis of heredity. Variation means difference between parent and offspring. कौन कौन variation अच्छी? Character है the heritable feature among the parents and offspring. For example, eye color, हम कहबे hair texture, कि straight hair, curly hair, ये सब जिनिस कौन आछी ना केमती parent और offspring तक क्लास हम 10:45 पे सरीबा एनी डाउट एनी कौन प्रॉब्लम किछ होची क्लास को नहीं की you can let me know in the chat box trait are the variants of a character for example brown eye blue eye these things are the traits now alleles or allelomorph a term so man rakhiba alternative form of a gene is called as allele for example this capital T for tall then small t for dwarf are two alleles of a gene for the character that is height. तो जो character अच्छी height से height रो अभी दीटा form में देखो जे गोटे लाइट tall, second one is the dwarf. Then after homozygous, heterozygous. Homozygous कौन पूछी? The condition in which chromosome pair carries similar alleles of a gene and also known as pure line that is called as true breeding. For example, capital T, small t, capital Y, small y, all those things are called as the homozygous. In biology, whenever you will read this term homo means same. Whenever you read this term homo means same. So same capital D, small t, capital Y, small y. ये ହେଲା homo type homozygous ଆସିବ ଆଉ homozygous बनेको ଆମେ pure line ବୋଲି କହୁଛे मेंडल जोथ पे सक्सेस हेतिले ताको ही हमें कहुछे homozygous pure line मेंटेन हेतिला बोली in heterozygous the condition in which chromosome pair carries dissimilar allele of a gene that means capital D small t capital Y small y etc dissimilar they are not similar homo means similar hetero means different this one I'm called autotroph heterotroph those organisms who cannot produce the food for themselves and they have to depend upon others are heterotrophs. So hetero means different. जो अन्य कथा पढ़ुଛି अभी दिदा अलग अलग अछि ना असमान अछि dissimilar अछि similar homozygous dissimilar heterozygous simple the end. Next, dominant, recessive, phenotype, genotype, hybrid. Look at all those things. Dominant character में क्या पूछे? The character which is expressed in heterozygous condition, it indicates with capital letter. तो जो character टा heterozygous condition में निजको express करी पारुछि
the character which is expressing itself when present in an heterozygous condition. Heterozygous means these are different, both are different. In a different part, one is able to express itself, the other is not able to express itself. The expressed one is called as dominant, and the suppressed one is called as recessive. You need to remember this part. The character which is expressed in heterozygous condition, it indicates with capital letter. And recessive character, the character which is suppressed in heterozygous condition, it indicates with small letter. Phenotype means the physical expression of a character. Genotype means the genetic constitution of a character. But the gene केमते देखा जाउची, the gene केमते arranged, that is called as a genotype. And hybrid, an individual produced by mating of genetically unlike parents. So genetically unlike parents mate करिवे सेटा hybrid formation हबा. Hybrid बुझियोची genetically unlike. They are not similar. Dissimilar thing जदि mating करछन्ति fusion हेजे सेटु जो parent की सेटु जो offspring की बनोज, that is called as hybrid parent. So Gregor Johann Mendel, which is known as the father of genetics, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ. ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର, ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ. ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ ଅ ପ୍ରିଷ୍ଟ. ସେଠୁ ସେ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାହେଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ ଭିଏନା. ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ ଭିଏନାରେ ସେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ଅବାଉଟ ଫିଜିକ୍ସ. ସେ ଜଣେ ଫିଜିସିଆନ ଥିଲେ. ଦେନ୍ ତାପରେ ସେ ବିଙ୍ଗ ଅ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଆଜ ଅ ମଙ୍କ. While roaming around his garden, he used to see the differences of the colors in the flower, position of the flower, and the motor was different parts of the variation देखिले. And being a naturalist, when he observed all those variations, he asked to himself how it is being possible. Two plants are there, belong to same kingdom, same species, but these are not look alike. These are not similar. One is tall plant, one is short plant. One is having a round seed, one is having a wrinkled seed. One seed color is yellow, another is green. So how it is being possible? So Mendel who keenly observed କରିକି ଆଗ ତାଙ୍କର theory କରିଥିଲେ, experiment start କରିଥିଲେ. So Mendel conducted some hybridization experiment on garden pea, which is called, the scientific name is Pisum sativum, and kebetu kebe ଯାଇକି in the year 1856 to 1863. You can see the different flower color. One is white, second is the violet. These are the inflated pod. Inflated means fully constricted means you can see some constricted pods also. These are the round seed. Golia golia আছে round seed. The seeds are wrinkle ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ବି different part ରେ ହେଇପାରିବ. Then the C conclusion making in steps in making a cross in P. P रे cross କରିବା ପାଇଁ Mendel कौन काम करथिले ना selection of two pea plants with contrasting character. Then the emasculation कले. What is emasculation? Removal of anther from a bisexual flower without affecting the pistil is called as emasculation. For the bisexual flower जदि mo अबिका तारा काहाको हटाई दोची, पोलन ग्रेन वाला पार्ट को हटाई दोची, आंथर को हटाई दोची, without affecting the pistil, it is called as emasculation. और फायदा हमें कौन ना, the plant cannot do self pollination, and cross pollination is the only way to pollinate that plant, to fertilize that plant. The pollination कराला collection of pollen grain from the desired male parent and transferring to the female parent, and then collection and germination of seeds to produce substance. So Mendel तंको whole life जो 7 years से experiment करते 1856 to 1863, Mendel used to do these things only. तो सी कौन करना है, एपटो प्लांट में ले ताकि अबिका स्टिग्मा को आंथर को हटेले, अलगा डिजायर्ड प्लांट रो पोलन ग्रेन को की तापर डस्टिंग करले, देन ताको रीबैगिंग करले. तो এই जो काम से करछन्ती फॉर ए लॉन्ग टर्म लॉन्ग इंटरवल এই जो काम करछन्ती, देन से ताको सक्सेस सेटु मिलती. तो मन रखिबो, रोम वाज नॉट मेड इन अ सिंगल डे. ऑलवेज द गुड थिंग्स टेक टाइम. किसी भलो जिंस जब करू ता पे तमो टाइम लागो से कामटी करिया पई की. मेंडल को 7 इयर्स लागि से काम करिया पई की. And after 7 years also, जब से काम को publish करथिले, the 9th year 1865 रे publish करथिले, so बेबी तमते recognition मिल नथिला. तो scientific community काम को accept ही कर नथिले, because Mendel काम को statistics language रे describe करथिले. He was used to the naturalist जोटा बायोलॉजी को मैथमेटिकल लैंग्वेज रे डिस्क्राइब करथिले, तो लोक से बुझी पान नथिले जिंस को. तो ये सब जिंस थिला, स्टिल मेंडल हार्ड मान नथिले. आजी आफ्टर 160 years also आमे मेंडल को पाठ को आउथरे पढु छे, जानु छे, आम तमो फादर ऑफ
जेनेटिक्स बोली आख्या भी देछि द मेंडल जो हमें फ्लावर देखिले डिफरेंट डिफरेंट तार डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर थिला जेंति स्टेम रो हाइट ता टॉल हे परिबो डार्क हे परिबो फ्लावर पोजीशन एक्सियल हे परिबो टर्मिनल हे परिबो फ्लावर कलर वायलेट हे परिबो व्हाइट हे परिबो pod shape inflated or constricted pod color green or yellow seed shape round or wrinkly and seed color yellow and green these are the 7 pairs of contrasting characters that Mendel देखिଥିଲେ पिलाମାନେ ମନେ ରଖିବ ମଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ପାଇସମ ସଟାଇଭମ ଆର ଡିପ୍ଲଏଡ ନମ୍ବର ଇଜ କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର ଇଜ 14 listen 7 pair of chromosomes are there the chromosome number is 14 ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଡୋମିନାଣ୍ଟ ରିସେସିଭ ସାତଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମେଣ୍ଡେଲ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ ରେ so thank you so much for your kind attention and today we are going to end this class over here so I hope ତମେ basic terminology को बुझी पारिछो क्लास रे जहा जिन सब कहली अबाउट डोमिनेंट रिसेसिव एलील जीन एलिलोमॉर्फ लोकस पोजीशन कोड थाय तार देन मेंडल काहे की मटर प्लांट को चूज करथिले कोन थिला व्हाट आर द प्री मेंडलियन आइडियाज व्हाट आर द कांसेप्ट ऑफ जीन कांसेप्ट ऑफ डीएनए आई होप तमने पार्ट डिटेल से बुझी पारछो तो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हमें ए टू स्टार्ट करिया वेल ओके थैंक यू सो मच पिला माने जिन सब तम पढि दैथियो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स ए पार्ट टा स्टार्ट करिया